किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Krishna, I welcome you all, the manifold devotees who have assembled here. I especially want to welcome the senior Vaishnavas, the devotees of International Society of Krishna Consciousness, and from New Jersey, Vipul Malaviya ji, who is attending this katha on regular basis, and all the listeners and devotees who are listening this Bhagavatam Katha through the medium of Facebook, YouTube, Zoom, etc., through all the parts of world. And in particular, I would like to welcome the organizers who, in reverie of their ancestors, have organized this beautiful Katha on the occasion of Shraddh or Pitru Paksh. The Agarwal family from Seattle, Nidhi Agarwal, श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में and I welcome you all on the 5th day, and our humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam. So before we start the pastimes of the Lord, today is a very auspicious day for all of us. So today, the spiritual master of thousands of people and favorite disciple of Srila Prabhupada, whose behavior, knowledge, and nature, and whose beautiful voice and speech had inspired towards Bhakti Marg, the highly respectable Sri Bhakti Charu Goswami Maharaj's birthday is today. And in our Brahma Madhya Gaudiya Dhara or disciplic succession, so the Guru Maharaj's birthday is celebrated as Vyas Puja. So all over Iskcon it was celebrated as Vyas Puja. So we also had an invite from UK, but due to some technical error and some familial obligation, I couldn't attend. It was my misfortune. But now that I'm here and have this opportunity, then on this auspicious
day of Vyas Puja of Sri Bhakticharu Maharaj, we will just talk and then we will proceed further towards Bhagavatam. In the path of devotional service, if somebody progresses, then there are quite a few changes that they undergo, and the first and foremost is that the devotee becomes humble. Sri Bhakticharu Maharaj Swami, each behavior and action denotes his humility, and by the grace of his spiritual master Srila Prabhupada, whatever service he got. So, as you might be aware that there are very less movies based on Iskcon or Srila Prabhupada. So, but there was a movie that was made on Srila Prabhupada Abhaycharindas, which was, this responsibility was given to him who had never had any experience of the same, but yet by his hard work, humility and sincerity, he took this step forward. So as we live here, so we get to know how much hard work he put, because people tell that how he used to come and get this done. He had this sincerity in his, and the request or order given by the spiritual master has to be followed to the teeth, no matter how hard it might be. So, on the life story of Srila Prabhupada, he created this series of Srila Prabhupada, and we can make a program where we all can see on this Zoom platform. When we watch on a group, then it is more enjoyable. I will request Amit Narayan Prabhuji to arrange these 7 days. And today is Bhakticharu Maharaj's Swami's Vyas Puja. We will take a vow that we will see or watch this together and get his blessings and mercy. In our life, we have met him quite a few times and talked over the phone, and he always said that we should visit Ujjain. He left his body in Orlando during the COVID, and there was a discussion that such a great saint who was capable to inspire lakhs and lakhs of devotees, and he left his body suddenly. And while contemplating, I went to Ujjain, that he lives in Ujjain, and he had made a beautiful temple, and he faced so much distress and obstacles for this temple, but he completed this project, and Ujjain is the place of Mahakaleshwar, and the one who is sitting on the lap of Mahakal, then how could Kal disturb him? So he could not be affected by anything, not even COVID. So he finished his pastime here, and he entered the pastime of the in eternal abode of the Lord. He had a great achievement,
And that was his sweet attitude and nature. As we hear his name, immediately we remember Bilva Mangal Thakur as Krishna's everything is sweet, adharam madhuram. Similar as Krishna has everything that is sweet, and he is the devotee of such sweet Lord. So that is why he had so sweet nature. I cannot imagine that had he had ever been upset or angry on anyone. I've heard from Srila Guru Maharaj that when Prabhupada, when he was alive, who were allowed to give Diksha when even he was there. So all other sannyasis had given the permission to initiate disciples after he left his body. But to two people he gave this. And one of them is Bhakti Charu Goswami Maharaj. And he saw his quality and gave him this permission to initiate disciples even when Srila Prabhupada was himself there. If I have to speak in Gujarati, as Kedar Rag was Narsi Mehta's launch pad. Similarly, there are so many achievements of Bhakti Charu Maharaj and the Guru Ashtakam was a gift by Bhakti Charu Maharaj. Traranyakarunya Ghanaghanatvam Praptasya Kalyana Gunalavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sansardava Analalida Loka Tranaya Karunya Ganaganatvam Praptasya Kalyana Gunanavasya Vande Guru Shri Charanarvindam. अब ये राग गाओगे तो पहले भक्ति चारू स्वामी को प्रणाम करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन क्योंकि ये उसका है. So before we sing this, we should bow down at Bhakti Charu Maharaj Swami and take his blessings and mercy and then move forward. Because this belongs to him. And he has given us so much. As I mentioned earlier, he created the Abhacharan series based on the life of Srila Prabhupada, and he established so many temples and goshalas and books and bhajans, etc. And the most important for me is that he gave all of these things. He gave so many beautiful disciples to us. In our assembly, we have quite a few disciples of Srila Bhakti Charu Maharaj.
Shri Kusumika Mataji, Yashomati Mataji, Vrindavan Chandra, and from UK, so many disciples of Bhakti Charu, and in association of such wonderful devotees, and their behavior introduces their nature and he reminds us of him, and let's remember him and pay our obeisances at his lotus feet and take his blessings and mercy, that in the path of devotional service we should never forget our humility, no matter how much we progress, and our behavior towards the devotees should always be loving and affectionate, and we just ask for this benediction from him, and let's proceed further towards the Bhagavatam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. श्रीमद् भागवत पितृ पक्ष, श्रीमद् भागवतम पितृ पक्ष, पवित्र पितृ पक्ष चल रहा है. This auspicious Pitru Paksh is going on, and we all are listening to Srimad Bhagavatam's pastimes. In Mahabharata, there is beautiful pastime which you all might be aware. Pandavas were given the exile for 12 years, and during this time, there was a situation that arose. Nakul and Sahadev went to get water, and the Yaksh told him to answer his question, and they became unconscious. And then Arjun and Bhim also went, and they all became unconscious. And Yudhishthira Maharaj goes in search of his brothers, and then he hears the oracle of the Yaksha that you should answer my questions, and if you're fail, then you will also die, but if you're successful, then I will make your brothers alive too. So he was no other than a Yaksh who was cursed that you will only be benefited if you discuss with someone who had knowledge. So, and he said that what is the passing marks? He said that you need to score 100 out of 100. If there is an exam like this today, nobody is going to succeed. So you have to answer all the questions correctly. And there was no phone a friend, no lifeline, no audience poll, no option like Amitabh ji. So the 100 questions would be asked, and you need to answer them correctly. And if even one answer is wrong, that will make a difference of life and death. So amongst these 100 questions, there was a question on the glory of Pitrus or our ancestors. So the Yaksha asked, what is heavier than earth? Yudhishthir ji immediately answered, Mother. Who is greater than sky? He said, Father. Who is the soul of a person? Son. And who is faster than the wind? That is heart. In numbers, more than the haystacks is worry. At the deathbed, a person's best friend is whom?
And he answered, charity. If somebody is at his deathbed, then only thing that can help him is the charity that he has performed during his lifetime. What has covered this earth? This ignorance. And what is the laziness? Not to perform the righteous duty. What is the best bath? That is to the real bath is to clean our heart. See how tough questions are. If I have given these answers, if I ask you again, you won't even remember. But here, Dharmaraj Yudhishthir was answering these questions. What is blacker than the coal? What is the greatest dharma or self-righteousness? That is charity. What is the process to get the heart's anxiousness? That he replied, to clean. So such questions were being asked. All these questions were being asked in verse form, which is mentioned in Mahabharat. So next 4 questions are related to the glories of Pitru Mahima. That is why we are sharing this pastime. So let me present this verse in front of your screen. किमाश्चर्य कः पंथा काच वार्तिका कुमोदते ममेतांश्चतुरः प्रश्नान् ममेतांश्चतुरः प्रश्नान् कथयित्वा जलं पिब कथयित्वा जलं पिब। अब प्रश्न का उत्तर तो जल पीने के लिए ही चल रहा था ना, युधिष्ठिर महाराज पानी पीने गए थे ना। So they all went there to get some water to drink. So he said, my next 4 questions, so in each verse he is asking 4 questions. And he said that you answer these 4 questions and then you can drink the water. And what are these 4 questions? So in the first line are the 4 questions. First, Kim Acharya, then Ka Pantha, then Ka Cha Vartika, Ko Modate. इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। ये भी एक कथा करने लायक है। अमित नारायण प्रभु नोट डाउन कीजिए। This also can be a pastime. The conversation between Yaksh and Yudhishthir, where 100 questions and 100 answers are there, which has an potency to change our life. So whenever we get a chance, I get to note down. So the first and foremost question is, what is the most strangest thing? So Yudhishthir Maharaj answers, you can see in the verse on top screen. For each answer he speaks. Dharmaraj Yudhishthir has spoken one verse.
फिर दूसरे शब्द के उत्तर में दूसरा श्लोक, तीसरे शब्द में तीसरा, चौथे में चौथा। तो अभी जो ये आप ऊपर देख रहे हो, So the verse on top of the screen is an answer of Kim Ashcharyam. The Yaksha asked, "Oh Dharmraj Yudhishthir, what is the strangest thing in this world?" तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाभारत Then Yudhishthir Maharaj said in Mahabharat 1 Parv 1313 chapter, and Yudhishthir Maharaj said, Ahani, he says that thousands and thousands of people, Ahani Bhutani Gachanti. That means thousands and thousands of people are going. Where are they going? Yamalayam, that is the abode of Yamraj, in a single day. मतलब हमसे जो बड़े हैं वो भी, so people who are elder and people who are younger to us, or people, all the people around us dying. But what is strange, that the people who are left or are remaining, they never give it a thought that even I will have to die one day. And Yudhishthir Maharaj says that this is the strangest thing. हमसे बड़े मर गए, हमसे छोटे मर गए, आजू बाजू ऊपर नीचे रहने वाले, हमारे बाप दादा हमारे साथ एक टेबल पर भोजन करने वाले मर गए। People who had eaten the food with us on the same table had also died. Yet we never give it a thought that even I will have to die one day. If we have this thought, then we will never perform any sinful activity. But we don't think, and this is the greatest amazing thing. I don't want to elaborate much, and let's move to the second question. The second question is Kah Pantha. Kah Pantha. Panth means roadways or path. And what is the true pathway? Because in this world, to achieve the Lord, there are so many roadways or pathways. So many people have made so many religions and panthas. But what is the greatest roadway to attain the Lord? And Dharmraj Yudhishthir answers, and this is Srila Prabhupada's favorite verse, and he used to quote it more often. So Dharmraj Yudhishthir replies, the best roadway to attain the Lord is Shrutayo vibhinna nasorushiyasya matam pramanam dharmasya tattvam nihitam guhayam dharmasya tattvam nihitam guhayam
जनो येन गत सपंता। नोट करने जैसा श्लोक है ये। We should know this verse. Yudhishthir Maharaj replies, Tarko Pratishtha. If you want to argue, you will never be able to make a conclusion. And if you listen or read Shruti, then there are so many scriptures that you will finish your life and yet you will not conclude anything. And all the sages have different opinions. By discussion or argument, you won't have conclusion. You cannot read all the Shrutis, and all the sages have different opinions. So the best and easiest pathway to attain the Lord is Dharmasya Tattvam Nihitam Guhayam. That is the secret, that to get this path is very secretive and we cannot understand on our own endeavor. So that is that Mahajan or our previous Acharyas have followed the path, that we should also follow that path. That is the easiest and simple way and intelligent way to do. And who are the Mahajan? Vyadvyas Muni writes and enumerates all of them. So these 12 Mahajans have whatever path they have followed, and that to follow that path is intelligence. So this is the homework. What was the path of Bhishma Pitama? Whom did he worship? Brahmaji worshipped whom? Naraji worshipped whom? And all these people perform devotional service towards whom and what they did. That is the way to follow if we are intelligent. And Yaksh said that this is the correct answer. And he said that now I can give your brother, a few of your brothers' life back. So the third question is, Ka Vartika, in this world, what is the most interesting talk or discussion? This is what the Yaksha asked. And Yudhishthir Maharaj answers in this verse on top of your screen. In this word, Katahe means a walk. He calls this material ocean a walk. The walk in which we prepare or fry the fritters, that big wok is called karai. And so he says, he compares this material world to a wok which has the boiling oil, and we all are getting distressed in that wok. So the sun
through the medium of day and night is cutting our life. So the weathers keep changing, and day and night passes, the years pass, and all these living entities are getting fried in this material ocean. And this is the most interesting discussion. And that is the headline. The latest news is what? That in this material ocean, we all are getting fried in the material ocean. Woke. And that is the latest news. So the point that we want to discuss is the fourth question. That is Ko Modate. Tell me, O Yudhishthir, who is the most happiest of all? Mod means bliss, happiness. And who is the most happiest, satisfied? And Yudhishthirji replies, बोले 5 या 6 दिन में रोटी सब्जी भी मिल जाए, रोज नहीं है. So in 5 or 6 days, if we get vegetable and chapati, but we get that food in our home, that person is considered happy. Even if he gets once a week, but if he gets it prepared by his wife, sister or mother, then that person is happy. And if no matter how much good food you eat out, but if you can't eat at home, then that person is distressed. So you also need to contemplate this. If we get this food in our home, then that person is happy. And second, the person who is happy, Apravasi, that means a person who is not traveling is happy. And the third, the one on which I want to attract your attention is Kaha Modate Anrini. That means that a person who has no. So what is the meaning of Anrini? So if we break this word, Anrini means a person who has no obligation or who has no burden. So if we have any type of burden or obligation, then we will be distressed. In Srimad Bhagavatam, it's asked, a person who has so people will say that when we bought this home, we had taken the loan. So we took some loan.
So और all ये these ऋण are भी हमें types दुखी of करते loan, हैं, and these इसीलिए उसे also make us तत्काल देना distressed, चाहिए। and we should pay लेकिन them back as soon as हमारे possible. जीवन में But प्रकट रूप से कोई ऋण नहीं, कोई लोन नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। इसका even अर्थ है if we have no कुछ loan, ऐसे ऋण जो yet if हमको we have दिखाई नहीं दे रहे हैं distress in our लेकिन life, है। then there are a few loans और वह ऋण कौन से हैं? or वह ऋण obligation that we don't 5 see but प्रकार के we ऋण श्रीमद् have, भागवतम में and बताए गए हैं। these are described in Srimad Bhagavatam and वो has ऋण 5 5 प्रकार categories. के हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम। भक्तों, ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41 So नंबर का श्लोक। this is the ये 5 verse प्रकार के ऋण जब तक हम पर होंगे from हमसे Srimad वो नहीं हो Bhagavatam, and सकते। if we have this kind किस किस of का ऋण? तो सबसे debt पहले in our देवताओं lives, का then we ऋण। will क्यों? never be satisfied or क्योंकि happy. सूर्य देवता So the प्रकाश first देते is हैं, चंद्रमा चांदनी देते हैं, of वरुण demigods. देवता First, समुद्र because जल sun, इंद्र देवता moon वर्षा gives करते हैं, us और light, भी अन्य अन्य अनेकों देवता and हमारा all कार्य of them करते हैं। work for इसलिए us देवताओं के ऋण से मुक्त and होना। provide us. So we दूसरा, have to get हम पर indebted ऋषियों from का ऋण है। them. आप देख Then सकते हैं, देव और फिर ऋषि। first is Dev, then second is हमारे देश के Rishi. ऋषि मुनियों का ऋण क्या So दिया? the ऋषियों ने sages हमें गोत्र have दिया, given ऋषियों ने हमें us शास्त्र the दिया, clan, they have ऋषियों ने given हमें us the ग्रंथ दिया, scriptures, जिनके they have आधार पर given हम लोग सभी us प्रकार की interpretation समस्याओं से that मुक्त हो सकते हैं। we, on the basis of which तो we देवताओं can का get ऋण, relieved of all the उससे distress हमें and मुक्त होना problems. चाहिए। So we need आप to कहोगे get कैसे? indebted. तो So you ऋषियों का might ऋण, ask एक how. ऋण से हमें मुक्त होना चाहिए, So कैसे? how can we get फिर आगे indebted कहते हैं तीसरा, देव ऋषि भूत, or get भूत relieved माने of this प्राणियों debt? का ऋण। And हम then लोग इस there दुनिया is में रहते हैं, हम पर पशु the पक्षियों का debt ऋण of है। animals and जन्म plants, देने वाली etc. माता 2-5 साल तक दूध पिलाती है, Mother give और बाद drink, में तो हम gives milk गाय for का a दूध few years, या फिर but भैंस का दूध, we किसी न किसी drink the का milk दूध of पी करके cow or जीवन buffalo, and केवल we पीने में ही नहीं, become यज्ञ adult. करने के लिए, And even for भगवान की performing सेवा में homa, अनेकों sacrifice, प्रकार etc., से or to मिल्क serve की the Lord, आवश्यकता होती we है। तो ये ऋण require है, milk. जिनका So दूध हम पीते these हैं। all 2-5 पैसे is देंगे a और वो ऋण debt. से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। But just giving a few bucks हम जिस घर cannot में रहते हैं, आप ऐसे free घर us में of कभी this debt. दृष्टि करके देखो, We are living in उनकी a home, सारी if you see सामग्री वृक्षों से बनती है। with your eyes, तो then पेड़ all का the कितना things ऋण है are हम पर? made through the tree. So how much पक्षियों के indebted are कितना we ऋण to है? them? मधुर संगीत आदि सुनाकर हमारे The मन को birds मोहित give करते us melodies, so we are हैं। सो indebted to them देवताओं as का well. ऋण, ऋषि का ऋण, So भूत माने demigods, देवों का the ऋण, sages, saints, फिर चौथा and है Rinam आप्त means living नृणाम, entities. हमारे Then परिवार और Rinam, समाज का ऋण। that is the व्यक्ति debt अपने towards the समाज की society. उपज होती है। A person शिक्षा, is a product संस्कृति, of the परंपरा, society. सुरक्षा, He ये gets सब the कुछ अपने समाज से security, प्राप्त होता है। ritual, etc. इसलिए from आप्त the नृणाम society. हमारे कुटुंब, परिवार और समाज का ऋण So, पर हम पर होता है। so we are indebted to और जिस the पर हमें चर्चा society. करनी है, वो And पांचवा ऋण the है point पितृणाम। which we have to discuss is Pitrunam. पितृओं का ऋण। That is the सो debt of our कहने का अर्थ ये ancestors. है कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है। आप ऊपर So देखिए, अनऋणी, Yudhishthira said that अनऋणी, a person जो who कभी भी किसी को is ऋणी not नहीं है। indebted to anyone और is नीचे the कहते हैं happiest or पितृणाम, satisfied. पितरों के ऋण हम पर होते हैं। And इसका here अर्थ ये below in the होता है Bhagavatam it is कि said हम that सब पर we are पितरों का indebted ऋण to है। our जब तक हम ancestors. पितरों का ऋण And उतारेंगे that नहीं, implies that जीवन में we अंतिम में have सुखी to नहीं हो सकते हैं। get rid of this बहुत debt मेहनत करने पर भी if we have सफलता to नहीं become मिलती। happy. And शरीर if में we अनेकों work hard प्रकार के and yet रोग आ we जाते don't हैं, get success, अनेकों we प्रकार की get sick प्रॉब्लम्स again and बनती है। again. We कारण face distress हम and पितरों के problems ऋण में or हैं obstacles और हमें because पितरों का ऋण हमें we उतारना are चाहिए। indebted to our ancestors, and we should try to get और वो पितरों free का from ऋण कैसे these उतरेगा? debts. And how are we going दो to उपाय है get rid of पितृ these ऋण से debts मुक्त first? होने के लिए। So there are two solutions for the एक same. उपाय
First एक उपाय and के foremost, पीछे पितरों का संकल्प that करके हम उनका after श्राद्ध they करें leave the body, we और should पितृ पक्ष perform में भागवत कथा का श्रवण करें. food दूसरा offering उपाय towards है them आपको and बताऊंगा, venerate them. And the लेकिन second I will पितृऋण से give मुक्त tomorrow. होने का So ये to बहुत get relieved सुंदर of उपाय this है कि इस depth of श्राद्ध our पक्ष Pitrus में or ancestors, हम अच्छे से then श्राद्ध during ग्रहण this करें, Shraddha Paksh, we पितृ should क्रिया करें perform the और Shraddh साथ ही साथ उनकी very मुक्ति के लिए, carefully उनके and उद्धार के लिए भागवत work कथा का for श्रवण their करें. welfare by सो हमारा listening बड़ा to Srimad सौभाग्य है Bhagavatam. So कि we are गुरुदेव extremely महाराज के fortunate, सहयोग से and हम by सब हम the स्वतः अपना कल्याण support और of अपने Agarwal family, पूर्वजों के we are कल्याण हेतु not इस only भागवत listening कथा का for श्रवण our कर रहे welfare हैं. but for the welfare of our ancestors. गत सत्र में So हम सबने सुना previously we have किस heard प्रकार how धर्मराज युधिष्ठिर Dharmraj पितामह भीष्म के Yudhishthir पास जाते हैं. went to Bhishma पितामह Pitama भीष्म युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं and he shares और the knowledge with पितामह Yudhishthir भीष्म की Maharaj, दृष्टि भगवान श्री and कृष्ण के ऊपर then जाती है. Yudhishthir Bhishma Pitama मरते समय focuses पितामह भीष्म his भगवान श्री focus कृष्ण को on the स्तुति Lord करते हैं, and he venerates अपना the प्राण Lord त्यागते हैं. and leaves his body. दूसरी ओर महाराज परीक्षित On को other जन्म hand, हुआ. Maharaj Parikshit is born जन्म होते ही कुलगुरु कृपाचार्य and को बुलाया. Kulguru Kripacharya बालक is का called भविष्य देखा to ask for his और इस horoscope, बालक का नामकरण किया and he क्योंकि was विष्णु named ने इनकी रक्षा की है, because Vishnu has इसलिए protected इनका him. नाम रखता हूँ So विष्णुरात. his first name और ये was बालक जन्म Vishnurat, से ही परीक्षण कर रहा है, and as he भगवान को was खोज रहा है, इसलिए looking for the इस Lord, बालक का एक that नाम is रखा why है he was named परीक्षित. Parikshit. सो परीक्षित महाराज का जन्म So हुआ, Parikshit धीरे Maharaj धीरे वो was बड़े born, हुए. and gradually he became an जब ये adult, बहुत बड़े हुए तब पांडवों ने and परीक्षित का विवाह महाराज उत्तर की when कन्या he became an इरावती adult, के साथ करा दिया. he was married फिर to आगे चल के Iravati, परीक्षित महाराज को 4 पुत्र हुए, and then he जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम begot जन्मेजय, 4 sons, जिसकी and the कथा हम eldest of सुनते हैं. them was Janmajay, whose pastime we will hear. अब भगवान श्री कृष्ण Now Lord Shri Krishna हस्तिनापुर से द्वारिका चले गए हैं has और द्वारिका left गए बहुत दिन बीत for गए. Dwarika, and he तब has युधिष्ठिर been महाराज ने अर्जुन को there भेजा for quite a while, and कि भाई Yudhishthir तुम Maharaj sent द्वारिका जाओ, Arjun that you should go to परीक्षित Dwarika के जन्म की खबर भी सुनाओ and और get the कृष्ण की news खबर of लेकर आओ, सब कुछ ठीक ठाक Parikshit ji's कुशल birth मंगल तो है. and tell the news of तब Parikshit's अर्जुन द्वारिका birth जाते हैं and check on और Krishna. द्वारिका से So Arjun बड़े went to दुखी होकर Dwarika, वापस लौटते हैं. but he came back unhappy and distressed. अर्जुन ने देखा Arjun saw कि भगवान श्री कृष्ण that 128 Lord वर्ष Shri तक Krishna had इस संसार lived में for रहे और 128 and अपने a half संवरण years, करके अपने धाम and में चले after गए. completing his pastimes, he सो has returned कृष्ण to के his चले eternal जाने abode. का दुख So अर्जुन the को बहुत distress लगा of the और distress दुखी of होकर अर्जुन हस्तिनापुर the में वापस separation लौटते with हैं. Lord Shri Krishna, दूसरी ओर Arjuna is युधिष्ठिर filled महाराज को with अपशुकन होने लगे. उनको समझ में आ गया sadness, कि कुछ तो and गड़बड़ है. Yudhishthir ji is also facing अर्जुन some आकर bad omens, युधिष्ठिर and he महाराज को understood, बहुत सुंदर उद्गार and करते हैं कि महाराज हम Arjuna लोग लूट गए, said हम परास्त beautifully हो गए. that now we are devoid of a वास्तव master, में आज we तक have समझ been नहीं robbed. पाया I couldn't कि मैं understand. जहां जहां गया Wherever I विजयी went, होकर आया. I always won. मैंने जीवन में बहुत बहुत पराक्रम किए, I had gone लेकिन through आज so many battles in war, कोलबिल के बच्चों ने but युद्ध में मुझे हरा दिया today और a मैं few हार कर of वापस लौटा. मुझे आज पता चला कि मैंने मेरे Kolbil जीवन में have जितने भी पराक्रम किए fought with me and एकमात्र defeated कृष्ण me. की कृपा से So किए. today I realize that whatever battles I मुझे won आज were याद by आ the रहा mercy है, of Lord Shri अर्जुन ने बहुत Krishna सुंदर only. श्लोक कहा, So he said that बड़ा I महत्वपूर्ण remember श्लोक है. it's ये a अर्जुन very के important उद्गार verse हैं. in अर्जुन कहते हैं front कि of your जो screen. He भीष्म, says, कर्ण, गुरु
that Bhishma, Karna, Guru, that is Dronacharya, Shalya, etc. In there were so many huge opponents in the battle of Kurukshetra. Bhishma, who had fought and won with the demigods, and Karna, who was the eldest of the Pandavas, and their spiritual master, then Shalya, who was a great king, who all were part of the team of Duryodhana. But in the second line, Arjuna says, but before me, Vibho, that is Lord Krishna, was standing, and just by standing in front of me, by his eyes, he was stealing their lives through the potency of his eyes. So I didn't fought this battle, but Lord Krishna was fighting it for me. So I didn't win the battle, but Lord Shri Krishna did, and this is true. Arjun is today accepting the fact that although he was fighting, but Lord Shri Krishna was standing in front of him, and through his eyes, he was stealing the lives of all his opponents. In Skanda Puran, there is a pastime when this battle was going on. So before that, or prior to that, Krishna put a proposal that Bhim's son Ghatotkach should be married. So Pandava said that with whom? Krishna said to Yudhishthira Maharaj, there is a beautiful girl that her name is Morvi, and we should get him married. The only problem is that we'll have to fight Morvi, and she had a vow that whoever can defeat me will marry me. Yudhishthira said that to get married, we have to fight a battle. This is not suitable. But Krishna knows where to put the proposal. So he took Bhim in secluded spot, and he said that your son wants to marry, and Morvi is a good girl, but she has a vow that one has to fight, and the one who defeated will marry. Bhim said that we are warriors, and our introduction speaks for ourselves. So today's boys, they bring water and say that I will rub or massage your feet as well. So Bhim said that you can announce we are warriors, so we have no worry in fighting. So Ghatotkach and Morvi fought, and Morvi got defeated by him, and they got married. And after their marriage, they begot a son whose name was Barbarik, who used to pray Meenakshi Devi, because Morvi was a devotee of Meenakshi Devi. So Barbarik turned an adult, and he was very powerful, and it's mentioned in Skand Puran, which I'm sharing with you. So when it was announced that there will be a war
in Kurukshetra. So Krishna organized a last meeting with the Pandavas, and he gave a proposal. He said that, what do you think that in how many days will you be able to win this war? People were contemplating, we're not sure when it will end. People got tired when they will stop fighting because of Ukraine and Russia. So someone said that we will win in 10 days. Someone said 6 days. Someone said in 3 days we can win. So when they were saying like this, that time, this Barbarik was sitting there. He said that, Keshav, if you give this opportunity to me, I will win this war in one muhurat. I will change the direction of the war. He spoke in half Gujarati. And Krishna was thinking in his heart that this boy is very powerful and he can win this war. That is true. But it is my vow that Arjuna should be glorious. So then Krishna took his Sudarshan discus and then he cut the throat of Ghatotkach's son Barbarik. So everybody got distressed, but along with that he made it immortal. And then he said that, why are you distressed? He's immortal now, you're going to die. And Barbarik was also very satisfied and happy. It is mentioned in Iskcon Puran, and he prayed to Lord Krishna after this incident. So everybody got satisfied that this is a pastime between a devotee and the Lord. And then Lord Shri Krishna said that I am satisfied with your veneration and you can ask any benediction from me and I will fulfill your benediction. So he said that I have only one intention, just want to see or watch this war. Then Lord Shri Krishna said that, you see that great mountain, you go and sit there and you would be able to see the war of or battle of Mahabharat being fought. And Barbarik went there and sat there, and for 18 days the war was fought. Listen carefully. After 18 days when they won, and when they all were sitting and everybody was praising each themselves. So someone said that I fought very well, that is why we won. And Bhim also said that because of me, Arjun said because of me, so on and so forth. Then Lord Shri Krishna said, we were focused on fighting one opponent, but Barbarik was seeing the whole battle. So we should leave this decision and we should ask Barbarik for this decision. And whoever he decides has won the war. It is mentioned in Iskcon Puran that they all went to Barbarik and they asked his head that you have seen the whole war. Who is the man of the match who made this war to be won? Then in Skanda Puran's verse,
I haven't bought it. बर्बरिक बोला But Barbaric कि replied अर्जुन के रथ पर that एक सुंदर on the chariot of मूर्ति Arjun खड़ी थी there was और a वह four-armed चतुर्भुज मूर्ति इस महाभारत के युद्ध में deity, सारे योद्धाओं and का विनाश कर रही थी। he was the one who वास्तविक was विजयी destroying अर्जुन के all the रथ पर खड़ी warriors, हुई उस and चतुर्भुज मूर्ति भगवान कृष्ण की हुई है। the actual victory is of ये this युद्ध four-armed Lord कृष्ण Shri जीते हैं। Krishna. This war has तो been कुल won by मिलाकर Lord Shri यहाँ पर Krishna. जब अर्जुन So कृष्ण का समाचार लेकर आए कि कृष्ण घर when पर Arjun नहीं brought the है, वो news चले of गए, Lord तब वो कैसा Krishna's हुआ, वही कथा स्कंद पुराण में भी आती है। leaving this material अब world, यहाँ पर युधिष्ठिर को पता चला so कि when कृष्ण चले Yudhishthir गए ji हैं, realized that तुरंत निर्णय ले लिया, the Lord सब has चले गए, left, मैं भी he नहीं took रहूंगा, the decision मैं भी that even चलूंगा। I don't want to stay here. तब भीम अर्जुन नकुल सहदेव ने कहा तो फिर हम भी And नहीं all आएंगे। his brothers also said that, तब what will परीक्षित we को do बुलाया, without you? उसका राज And तिलक they था called Parikshit and they और announced him the पांडव king, हस्तिनापुर से हरिद्वार, and they हरिद्वार से went हिमालय to Haridwar, और and फिर from there to हिमालय से Himalaya, स्वर्गारोहण and करते हुए from Himalaya भगवान to के the धाम में heavenly प्रविष्ट planet, हुए। and went to the eternal abode of the दूसरी ओर Lord. On the other hand, परीक्षित महाराज के हाथों में शासन आया। Parikshit Maharaj परीक्षित got the महाराज reins of the दिग्विजय करके kingdom, पूरी दुनिया को जीते and he won the whole world. और उनके राज्य में जब देखा And in his कि kingdom, when कलयुग he प्रवेश saw कर गया है, तब Kalyug परीक्षित has ने just entered, कलयुग को then 4 जगह पर स्थान दिया, he gave him जो 4 कथा आप सब places to जानते हैं। stay. You all are aware. एक दिन परीक्षित महाराज So भेड़ one day भेड़िया करने के लिए वन में गए he went और प्यास लगी, hunting in the पानी नहीं forest, मिला, and he was समीक hungry, ऋषि के आश्रम wanted में गए, to ध्यान drink करने water. लगे। He went to this कोई hermitage of सच्चा ध्यान Samik है कि Rishi. झूठा, परीक्षा लेने के So लिए he बोला, just वहां wanted सर्प to उठाया, test उसको whether गले में रखा, this वो तो ध्यान में saint बैठे थे, is बोले ये तो सच्चा pretending or ध्यान है, is he बेफिक्र वहां से in चले गए। trance. लेकिन So उसके he पति realized that श्रृंगी को पता he चला is in और बड़ा trance. So he सोचे just समझे drank the water and went. परीक्षित को And श्राप his दे son दिया कि Shringi 7 cursed दिन में Parikshit that परीक्षित in की 7 मृत्यु हो days जाएगी। you will die or he और will जब die. परीक्षित महाराज को ये And बात when पता Parikshit चली, Maharaj परीक्षित महाराज तुरंत अपना घर द्वार, realized, अपना सब he कुछ left त्याग कर everything हरिद्वार भागीरथी गंगा and के तट पर आए went to the banks of और संकल्प Ganga ji, किए कि इन 7 दिनों में and he took मैं the vow that कृष्ण in कथा 7 days सुनूंगा। I will listen to ये the पता चलते pastimes ही of संसार Lord के Shri सभी Krishna. ऋषि मुनि अपने And शिष्यों को when लेकर this news उस spread, भागीरथी के तट पर all आए। the परीक्षित ने sages सबको came प्रणाम with their किया, disciples स्वागत किया, and सबको they आसन पर bowed down. बिठाया, लेकिन एक ही प्रश्न, मुझे कौन But कथा सुनाएगा? there was only one question that परीक्षित was के मन prevalent, में that शुद्ध who will कथा सुनने की प्रबल इच्छा, और इसीलिए परीक्षित speak महाराज the katha for me. वो देव And योग Parikshit से, Maharaj had भगवत such योग से, तत्र a भगवान desire भगवान to व्यास listen to पुत्र the pure श्री वेदव्यास जी Bhagavatam, के पुत्र परम and by पिता the चिन्तामणि mercy सुखदेव गोस्वामी of the Lord, महाराज परीक्षित Shukdev की सभा में Goswami प्रकट हो गए। entered or manifested यदि in क्षया the गाम assembly पुत्र of Parikshit मनुपेक्ष, Maharaj. जो स्वतंत्र गति से विचरण करते हैं, So Shukdev ji, अलक्ष्य who लिंगो is independent निज and लाभ तुष्टो, moves on his own accord, ऐसे सुखदेव गोस्वामी such Shukdev Goswami, जिनकी सुंदर who मूर्ति है, जिनका रूप परम is सुंदर है, beautiful and he doesn't अनेक stay स्त्री और anywhere for बच्चों से long, घिरे हुए and he's शीघ्र ही surrounded चलते by हुए आ रहे थे, children तम and अष्ट women, वर्ष and he सुकुमार was पाद, coming, 16 वर्ष की जिनकी आयु थी, and he is श्याम वर्ण 16 का year जिनका old. शरीर था, He लंबे is लंबे जिनके बाल थे, कमर black पतली hued, छाती चौड़ी, who had long और hair, सुंदर जिनका स्वरूप लगभग and who भगवान was कृष्ण beautiful जैसा स्वरूप था, and looked ऐसे like सुखदेव Lord जी Shri जब आए, Krishna. तब सारे ऋषि मुनि So अपने when अपने स्थान such पर खड़े हुए, Shukdev ji came, परीक्षित all the महाराज ने sages शिवजी rose का स्वागत किया, and उच्च welcomed him आसन पर बिठाया and और gave दोनों him a हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित throne. सुखदेव जी को And कहने लगे, Parikshit Maharaj told Shukdev ji हे with folded सुखदेव hands, गोस्वामी, O Shukdev Goswami, अतः प्रचामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु, में जानता हूँ आप he योगियों said के that गुरु I am हैं, aware that you बस are the मुझे spiritual इतना master बता of दीजिए the great yogis. कि मेरे Just जैसा let me आदमी know 7 that a दिन में person मरने like वाला me हो, who is about to die in उसे क्या 7 करना days, चाहिए, what should he do? मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, And what is the greatest मुझे क्या responsibility सुनना for me? चाहिए, यत What should श्रोतव्यम I hear? यतो जप्यम
यत कर्तव्य What should I तभी करो। chant? मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या What जाप should I करना hear? चाहिए, What should I मेरी chant? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, What is my मुझे क्या स्मरण responsibility? करना चाहिए, What should I मुझे remember? किसका भजन करना चाहिए Whom और should क्या नहीं I करना perform चाहिए, devotional service towards कृपया whom? करके आप बताइए। And what I should avoid नूनम doing. भगवतो So ब्रह्मण please let me know. गृहेषु गृह मेधि नाम, मैं ये भी जानता हूँ And I कि am आप एक aware स्थान पर ज्यादा that देर तक रहते नहीं हो। you don't stay at any place for long. सर्वोदोहन काल मात्रेण So you गृहेषु गृह just stay मेधि नाम। there for the time when गाय का दोहन the काल जितना होता है cow's उतना milk ही is आप एक स्थान पर रहते हो, लेकिन मुझ पर कृपा taken करो from her. और So मेरा उद्धार you करो। stay there for only इस that प्रकार period से of time. परीक्षित की जिज्ञासा। So और on फिर the सुखदेव inquiry गोस्वामी ने of कहा कि परीक्षित Parikshit तू ji, Shukdev श्रद्धालु ji है, replied तू that जिज्ञासु है, are इसलिए अवश्य मैं you have तुम्हें faith कथा and you are सुनाऊंगा। inquisitive. So I will तो परीक्षित और tell सुखदेव you का मिलन हुआ, भागवत or का प्रथम speak स्कंद समाप्त the हुआ। katha अब to you. दूसरा स्कंद हम So the प्रारंभ first करेंगे। canto एक ends. छोटी सी सूचना So के we will साथ। start the second canto. हरे But कृष्णा before हरे that, a कृष्णा small कृष्ण कृष्णा information. हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लाल गोविंद जी का कि बहुत सुंदर आज इस पंचम दिवस के अंतर्गत हमने इस भागवत के इस अद्भुत प्रसंग को आस्वादन किया, जहां पर अर्जुन का रियलाइजेशन प्रभु जी ने बहुत सुंदर हमें बताया कि कैसे अर्जुन जिन्होंने इतने इतने वीरों को वीर गति को प्राप्त कराया, वो उनको रियलाइज हुआ कि कहाँ कब रियलाइज हुआ, जब वो इस कोल व्हील के छोटे से बच्चों से युद्ध को हार गया। और जब उन्होंने द्वारका गए और पता चला कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते अपने ये जो भौतिक जगत में इस लीला को संपन्न करके पुनः अपने धाम को प्रस्थान किए हैं। So when he was returning, he got all this realization कि वास्तव में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, कि जब भगवान इस धरातल पर थे तो उनकी उपस्थिति से ही ये जो मैं अर्जुन हूँ अर्जुन बन सका। तो ये सुंदर गुण है भगवान के भक्तों के अंदर कि वह समझते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में जो भी ये घटनाएं घटती है, हम we are always ready to give credit to ourselves. It is me who did all this, it's me because of me, मेरे कारण ये सारी हुआ। परंतु जब इस प्रकार की कोई जो अनिश्चित घटनाएं घटती है, then we are always ready to blame Lord कि सब तुमने किया है, राइट, भगवान के कारण सब हुआ है। तो बहुत सुंदर ये भक्त का गुण प्रभु जी ने यहाँ पर प्रकाशित किया कि कैसे भक्तों को होना चाहिए, और भक्त सदैव भगवान की पर आश्रित, कृपा के ऊपर आश्रित होता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर अर्जुन के इस दिव्य गुणों को प्रभु जी ने हमें आस्वादन कराया, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर बर्बरिक की कथा जो हमने सुनी, और बर्बरिक ने जो पूरी कथा को ही वाज एक्चुअली वी कैन से ही वाज अ कमेंटेटर, जो बाहर से एक एज अ ऑडियंस वो सारी चीजों को विजुअलाइज कर रहे थे और देखा कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वो सारी महारथियों को जो अर्जुन मार रहा है उससे पूर्व वो मार रहे थे। तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना, कालोस्मि लोकक्षय, आई एम द काल इन फॉर्म ऑफ डेथ, आई डिवोर, मैं ये सारी चीजों को मैं नष्ट करने वाला हूँ, अगर तुम इसे करोगे तो श्रेय तुम्हें प्राप्त होगा। तो भगवान की यही इच्छा थी कि अर्जुन को इसका श्रेय मिले, इसलिए उन्होंने बर्बरिक को मारकर उनको अर्जुन को श्रेय मिलाने देने के लिए भगवान ने इस युद्ध को कराया और अर्जुन को आगे रखा। सो भगवान भी चाहते हैं कि हमारे भक्ति अपने भक्त की ख्याति बढ़े। ये भगवान का भी बहुत सुंदर गुण है कि वे चाहते हैं हमारे भक्त उनकी ख्याति हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और साथ ही साथ बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करना और परीक्षित महाराज की रक्षा करना, ये सुंदर आपने आस्वादन कराया यहाँ पर, कैसे भगवान सदैव ईगर रहते हैं और एक्टिव रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और यह कथा आपने आस्वादन कराई हमें। साथ ही साथ बहुत सुंदर पितृ महिमा यहाँ पर हम सब श्रवण किए प्रभु जी के मुखारविंद से, जो कि यक्ष महाराज, यक्ष तथा युधिष्ठिर महाराज के उस प्रश्नों के अंतर्गत
ये सुंदर कथा आई, जहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रश्नों के उत्तर हमें श्रवण करने को मिले आपके मुखारविंद से। और विशेष ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको हम हमारे जीवन में भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि किम आश्चर्यम, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि अहनि अहनि गच्छन्ति भूतानि यमालयम। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे पड़ोसी, हमारे फैमिली मेंबर्स, दे आर डिपार्टिंग वन आफ्टर अनदर, and we are having still this conception in our life that मेरे केस में exception होगा, that I will not be somehow the case। तो ये हमारे सबके मन में ये भ्रांत धारणा है, ये माया रूपी आवरण लगा हुआ है कि हमारे जीवन में या फिर हमें somehow I'll be saved from this। तो इसी के कारणवश हम ये इस विषय पर अधिक सोचते नहीं है। यदि हम इस विषय में अधिक सोचे कि शायद हम भी कल जाने वाले हैं, हम पल भर के लिए सोचते हैं। जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं परिवार में, तो तभी थोड़े कुछ समय के लिए वो वैराग्य सभी के मन में, सभी के हृदय में आता है, परंतु वो परमानेंट नहीं रहता है। कुछ क्षण के बाद वो वापिस हम विस्मृत कर जाते हैं। इसीलिए हम वापिस देह भावना में आ जाते हैं और शारीरिक स्तर पर वापिस जीवन जीने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बताया कि ये प्रश्न में अहनि अहनि गच्छन्ति, हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि भजन भक्ति करें, इस चीज से हम ये ज्ञान प्राप्त करें और सदैव इस ज्ञान में रहें कि हमें भी एक दिन जाना है। तो जो व्यक्ति को ये ज्ञान रहेगा, he is one who is always in this knowledge that I am also going to be die, तो वो इस प्रकार से कर्तव्य करेंगे जो कि उन्हें आने वाले जीवन में आने वाली या भगवान के धाम में जाए। तो बहुत सुंदर ये कथा हमने श्रवण की। और क पंथा क वार्तिका और की को मोदते, इन सुंदर 4 प्रश्नों में प्रभु जी ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हमें श्रवण कराई कि हमें किस पंथ को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी हम देख रहे हैं देयर आर वेराइटीज, बहुत सारे पंथ हो चुके हैं आजकल। व्यक्ति को सदगुरु खोजना हो, अगर वो सिंसियर है तो डेफिनेटली कृष्णा विल सेंड गुरु टू हिम, अदरवाइज ही विल गेट बेविल्डर्ड एंड ऐसे पंथ में जाकर जुड़ जाएगा जहां पर गुरु भी नरक में जाएंगे और स्वयं भी नरक में जाएगा। तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि हमें कौन से पंथ को फॉलो करना चाहिए। तो प्रभु जी ने बताया ना कि तर्को प्रतिष्ठो स्मृति विभिन्न महाजनो ये न पथा सकंता, तर्क करने जाएंगे तो बहुत सारे उसका कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए महाजनो ये न गत सपंथ। तो महाजन कौन है? प्रभु जी ने बताया कि वह जो 12 महाजन है, कपिल, भीष्म, देव व्यास, वैयासकी और यमराज, ये सारे 12 महाजन हैं जो कि हमने शायद प्रभु जी के मुखारविंद से इनकी भी कुछ श्रेष्ठ कथाएं श्रवण की है। कैसे ये महाजन है, इनके अगर पद चिन्ह पर हम चलते हैं तो हमारा ये जो जीवन सार्थक हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल बात यहाँ पर बताई है कि महाजनों ये न पथ सजनता, हम सबको जिस पद चिन्ह पर, महाजनों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए जिससे कि हम हमारे जीवन को सार्थक कर सके। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और साथ ही साथ बहुत सुंदर आज, जैसे प्रभु जी ने बताया, भारत में तो आज दिवस चेंज हो चुका है, डे चेंज हो चुका है, बट श्रीला भक्ति चारू स्वामी महाराज की व्यास पूजा के अंतर्गत कुछ प्रभु जी ने हमें श्रवण कराया कि कैसे भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के उन प्रिय शिष्यों में से एक थे जिनको प्रभुपाद ने यह सुंदर आज्ञा दी थी। उनकी उपस्थिति में ही उनको शिष्य बनाने की आज्ञा दी थी। जनरली इट नेवर हैपेंस, जब गुरु यहाँ पर इस धराधाम पर उपस्थित हैं तो वो शिष्य प्राय किसी को स्वीकार नहीं करता एज ए डिसाइपल। तो इसका अर्थ यही है कि उनके अंदर श्रील प्रभुपाद ने ऐसे दिव्य गुणों को देखा, परखा, तब जाकर उनको ये आज्ञा दी। और बहुत ही सुंदर उन्होंने कंपाइलेशन किया कि कैसे श्रील प्रभुपाद जो अभय चरण विंद, हम प्रभुपाद की जीवनी को लेकर बहुत ही उत्सुकता रहती है कि श्रील प्रभुपाद ने इतनी सुंदर इस संस्थापकों को स्थापना की, वो भी उस एज पर व्हेन ही वाज ऑलवेज ऑन द डेथ बेड। लाइक हम कह सकते हैं कि 70 साल की आयु में वह व्यक्ति, जो व्यक्ति प्राय सोचता है कि मैं अपने घर में, अपने फार्म हाउस में रहकर एक आराम की जीवन बिताऊंगा क्योंकि अब तक मैंने बहुत कुछ कर लिया,
प्राय सबकी सोच यही रहते हैं, वी टेक रिटायरमेंट फ्रॉम आवर मुंडेन लाइफ, और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद ने अपनी स्वयं की निजी स्वार्थ की परवाह ना करते हुए उन्होंने लोक कल्याण हेतु इस आयु में भी भ्रमण करना सोचा और लोगों को कृष्ण भावनामृत दी। तो श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में हम सबको ये कृष्ण भावनामृत को दी। और ऐसे अभय चरणारविंद प्रभुपाद की जीवनी, जिसमें बहुत कुछ है, हमने तो जस्ट यहाँ पर एक दो शब्द बताए, परंतु ऐसी पूरी जीवनी प्रभुपाद की इस अभय चरणारविंद इस सीरीज में श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज ने बताई है, जिसको हम सबको देखना चाहिए। और we'll definitely have a plan that we can all together sit and observe, see, देखेंगे इस दिव्य प्रभुपाद की सीरीज को, प्रभुपाद की जीवनी को। हालांकि ये जीवनी हमें प्रभुपाद के उस प्रभुपाद लीलामृत में भी प्राप्त हो सकती है, बट फिर भी हम यहाँ पर इसको देखेंगे कभी, जहाँ पर इसको। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आज हमने इस भागवत कथा के पंचम दिवस के प्रथम सत्र में भागवतम के इस अनेक विषयों में और भागवत के साथ साथ भगवान के भक्त की, जो कि श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज हैं, उनकी कुछ कथा श्रवण की। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। आइए निवेदन करें श्रीमान लाल गोविंद जी से कि इस शेष कथा को भी श्रवण कराएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तदहं ते विधास्यामि महापुरुषिको भवान् यस्य श्रद्धत तामाश्रु स्यान्मुकुन्दे मति सती। Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit, when met each other, Parikshit Maharaj presented a question or inquiry, and Shukdev ji replied beautifully that you ask the pastimes of the Lord, I, me, and I will speak to you. Tasmin Dhyasmi, I will speak to you. And why will he speak to Parikshit about them? Why? Because he is Mahaparushiko. Mahaparushiko means he's an exalted devotee of the Lord. And he is a devotee of the Lord. And Yasya Shraddhatam. And you have faith in the pastimes of the Lord. This is the qualification of the listeners to listen and understand Bhagavatam. One should have to be a devotee of the Lord, and he should have faith in the pastimes of the Lord or Lord. A person who has faith and is a devotee, then immediately his heart and mind will be focused on the Lord. As a chaste woman is always focused on her husband, similarly, his mind and intelligence will be focused on the Lord, and he will not roam around here and there. So we just need two ingredients. First, to be a devotee, great devotee of the Lord, and faith. So we need both of them. In Srimad Bhagavatam, we need to have faith
विश्वास चाहिए। एक And बार क्या हुआ सुनिए। so once what महाराज जनक जो है happened, ना, जनक जी King Janak रोज कथा सुनते थे used to listen to the pastimes of the Lord गंगा daily किनारे। on the banks व्यास of Ganga ji, जनक इत्यादि अनेक लोगों को कथा सुनाते थे। and Vyas ji used to लेकिन speak एक परेशानी क्या थी जानते हैं? pastimes to them. But what was जब तक जनक जी न an आते, obstacle? That till the तब तक time व्यास Janak जी ji was कथा not here, शुरू नहीं करते थे। Vyas ji could not start the कभी pastimes. कभार जनक जी को आने में देरी And हो जाती तो sometimes राह he will देखते, be late, and he used to वक्ता wait for him. व्यासपीठ पर श्रोता की राह देखते कब जनक जी आएंगे, फिर They ये used कथा to शुरू wait होगी। for the listener, Janak ji, जब and इस then he प्रकार से will start. व्यास जी करने लगे So when तो it so अनेक happened, श्रोताओं के पेट में दर्द होने लगा। other people अन्य got श्रोता distressed आपस में चर्चा करने लगे and they started discussing कि वक्ता का मन तो that जनक जी के ऊपर ही लगा हुआ है, speaker is focused मतलब on हम लोग गरीब Janak हैं, ji. We तो are हमारी ओर कुछ poor, नहीं देखना है। so और he जनक doesn't जी focus पैसे on वाले us. हैं, राजा And हैं, because Janak ji तो is a बस king and उसी rich, की राह वो so वो they आए wait नहीं for तो him. कथा भी शुरू नहीं करना है। And they don't even, he doesn't even मतलब start the ये तो pastime ज्ञानियों के till व्यास he हैं, comes. So he हमारे is व्यास the नहीं है, ऐसी निंदा होती है। Vyas for व्यास जी को rich छोड़ो, and not for us. हमें भी लोग कितना कहते हैं And कि even people कथा criticize प्रचारण me में ये सब नाम लेने की that क्या जरूरत है, why do you need to take the ये names of कथा आयोजक people? को इतना याद करने की क्या Why जरूरत do है। बड़े you बड़े लोग, बड़ी remember बड़ी these अथॉरिटी organizations? हमको कहती है, लेकिन हमारी अपनी अदा But है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, I don't कहने pay वाले कहते heed to रहे। such criticism. व्यास जी को भी ऐसा हुआ, बोले So ये तो Vyas ज्ञानियों ji के व्यास जी also, हैं, पैसे वालों को ही देखते हैं, हमारी कोई कदर नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। मतलब जनक जी न आए तब तक कथा भी शुरू so, नहीं करनी है, मतलब इतनी महानता। ये बात व्यास जी को so पता चल गई। when Vyas ji realized this, मामला क्या है, that ये लोग घुस कर रहे हैं आपस में, they have मांझला been क्या है, talking behind व्यास my जी समझ back, गए। and what are they talking? So एक he दिन understood. And one day, व्यास जी ने माया रची, Vyas ji और वो माया क्या थी, सब लोग कथा में आकर बैठे हैं, जनक जी भी आ चुके हैं, सब लोग कथा चल did रही है, a और pastime, कथा बीच उस गांव में आग लग गई जहां ये सब and लोग रहते थे, Janak ji and everybody was और there. गांव से सब लोग And बुलाने आए, चाचा जी गांव में so, तुम्हारे घर में आ गए, मामा ताऊ and there was a तुम्हारे आए, fire आग in the आग। village, and people came and said गांव that में there is a fire आग लगी, हमारे in घर the में भी village. आग लगी है, ये Our सुनकर houses सब are लोग burning. कथा चलती हुई They कथा को all छोड़कर उठकर वहां से भागे started running to save their homes और अपने गांव in जाकर, midst नगर of the जाकर, घर Bhagavatam, जाकर देखा तो and they आग went to फाग their home. कुछ नहीं था, There was no fire ये at अफवाह all. थी। It was वापस a सब false लोग आए news. तो सब And they लोगों ने all क्या came देखा back. And what did they कि saw? व्यास जी के सामने केवल एक That श्रोता बैठा है only और one वह listener was जनक there in महाराज front है। of Vyasji, and that is Janak अब बताने Maharaj. की जरूरत नहीं थी, So there सब was no लोग समझ need, गए but कि everybody व्यास जी understood आखिर जनक जी why बिना जनक जी के Vyasji कथा शुरू waits क्यों नहीं करते। for Janakji and why he doesn't start कारण यही until था he arrives. कि श्रोता The तो reason हजारों was थे, there were so many लेकिन उन listeners, हजारों but श्रोता के बीच of में these thousands of listeners, महापौरुषी को और only one श्रद्धधाम person was the परम greatest भक्त devotee of the Lord और and श्रद्धा had से firm युक्त faith in the Lord, महाराज जनक थे। and that was और Maharaj इसीलिए Janak. जनक जी जब तक And न that आए is why तब तक till the कथा point शुरू he न didn't करते। arrive, याद he रखिए, won't जो start सच्चा the साधु होता pastimes. है A वो great दो ही लोगों को sage कथा सुनाता है, एक always भगवान का speak the भक्त katha और to दूसरा only श्रद्धालु। devotee of the Lord who has आज firm सुखदेव faith. ने परीक्षित के Today, अंदर Lord Shukdev वो भक्ति देखी had और saw वो श्रद्धा that देखी, devotional इसलिए service कहा in him कि and कल faith, अहम ते and that is why अभिधास्यामि, he मैं said तुम्हें कथा that सुनाऊंगा। I will speak the pastimes to you. परीक्षित महाराज के मन में संदेह था कि Parikshit Maharaj 7 had a दिन doubt मेरे in his जीवन में mind बचे हैं, that I just have 7 days तो to इन live. 7 दिनों
And in these 7 days, how will I get liberated? For thousands and thousands of years, it is tough to get liberated. How Shukdev ji will manage to get me liberated in 7 days? Parikshit didn't ask, but there were expressions on his face, and Shukdev ji realized the same. And he said, "Don't worry." Khatvango, named king, खटवांग नाम के एक राजा हुए. So the king, whose name was Khatwang, who was a ferocious and courageous king, he went to heaven to help the demigods and win the war. And Indra said, he said that you can ask any benediction. He said that, can you give me liberate? He said, no, but can you tell me how much time I have left? He said that you have only two ghadi. So he said that if you can send me to the earth, you should send me immediately. And he came to Haridwar, and in the last 2 minutes of his life, he remembered the Lord. And in those last 2 moments of his life, in remembering the Lord, he reached the eternal abode of the Lord. So he achieved attained the Lord in 2 minutes, and you have 7 days, and 7 into 24. I will speak the pastimes to you, and I guarantee that your mind will be focused on the Lord, and you will attain Him. If Parikshit Maharaj asks, how is there any way to focus on the Lord? Then Shukdev ji said, no, only way to focus on the Lord is by listening to the Bhagvatam. Shukdev Goswami replies beautifully in this verse. पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपूटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयाविदूषितांशयम् वृजन्ति तच्चरणसरुहान्तिकम्. परीक्षित, ये Oh Parikshit, ye means this, these people drink. Pibanti means to drink. And what do they drink? Ye pibanti, the people who drink. And what do they drink? Bhagvat, that is the Lord or Bhagwan. And what do they drink? So they drink. Those people who drink Bhagavata, the Lord's, and Atmana means Paramatma. And the nectar coming from the mouth of the saints, the nectar of the pastimes of the Lord spoken by the great sages through the bowl of our ears, and they drink it in great number.
and they get detached और इतना ही नहीं, from the पुनन्ति ते, material desires. ये पिबंती ते पुनन्ति। आप देखो कितना सुंदर, जो पिएगा And वो who पवित्र हो drinks जाएगा। will get और purified. जो कृष्ण कथा संतों के मुख से निकली हुई कृष्ण So कथा का whoever पान करेगा, listens to ते the pastimes पुनन्ति, of the वो Lord पवित्र हो जाएगा will get और purified, वो विषय विदूषित विषय भोगों से मुक्त and हो जाएगा। he will be liberated और इतना from ही नहीं, the व्रजंती, material वो पहुंच desires, जाएगा कहाँ? and he will तच्चरण, reach where? भगवान श्री कृष्ण के चरण के Tadcharan. बिल्कुल समीप, अंतिकम। That is near ये बहुत to सुंदर the श्लोक lotus है। feet of the Lord. अब भगवान के धाम में तो आप लोग जाओगे, इसमें कोई So we डाउट all नहीं will है, go to the eternal abode of the Lord. लेकिन भगवान There is के no धाम doubt में भी in that. आपका But स्थान कहाँ होगा? what will be your यदि आप position चाहो कि मुझे भगवान से if you बिल्कुल want निकट रहना है, to be रहना nearest भगवान to से the Lord? बिल्कुल क्लोज, तो इस श्लोक का अंतिम Then शब्द है अंतिकम, तच्चरण Antikam, उस भगवान के Tadcharana चरणों से Antikam, बिल्कुल निकट that यदि रहना हो, nearest to तो his इस lotus जन्म feet, में if you want उस to stay भगवान there, की कथा का then श्रवण करना we चाहिए। should listen to his pastimes in this birth. कृष्ण कथा का श्रवण करने से We should listen to कृष्ण the का धाम pastimes तो of Lord Shri जाएगा, Krishna. लेकिन Will उससे not only उत्तम get his abode, साहित्य प्राप्त but we will करेगा। get his closest association. और जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं उसे कृष्ण And के पास those जाने who की जरूरत नहीं, कृष्ण उनके listen पास to आते the हैं। pastimes of Lord, they don't need to go and find the यत्र Lord. The सर्व Lord तीर्थानि, comes searching सारे them, तीर्थ उनके पास प्रकट हो जाते हैं। and all जो the लोग holy कृष्ण places कथा manifest सुनते हैं। in near to them. Those मेरे who पीछे गंगा नदी बह listen रही to है, the हरिद्वार pastimes of बैकवट the है, Lord. तो So मुझे एक this is कथा याद आ रही the है, backdrop सुना दूं? is इसी of कृष्ण Haridwar. कथा, In this same गंगा pastime, के तट पर on the banks of बृहत्तमा Gangaji, नाम के ब्राह्मण Grihatama named Brahmana भागवत कथा सुनाते थे। used to यहाँ पर speak श्लोक the लिखा है, Bhagvatam कथा as mentioned in उत्तमसता, the संतों के मुख से this कथा verse, सुननी चाहिए। that we should hear the glories of the भागीरथी Lord गंगा के तट through a पर devotee of the बृहत्तमा Lord. नाम के ब्राह्मण कथा सुनाते थे। किसको सुनाते थे? And to whom एक did योगी he थे used to speak? जो He जन्म used to से speak अंधे to थे a yogi who was और उसका blind नाम था from his birth, दीर्घतमा। and his name was तो Dirgatama. बृहत्तमा दीर्घतमा So को कथा सुनाते थे, Brihatama जो used to जन्म अंधे speak थे। to निरंतर Dirgatama, कथा सुनते 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 and कितना सुने जानते he हैं? used 100 to साल बीत गए। listen, and he heard the इस Katha for गंगा के 100 तट पर years 100 on the साल banks of बृहत्तमा ब्राह्मण Gang, ने river जन्म से Ganges. अंधे दीर्घतमा को कथा सुनाई। चलो ये तो ठीक है, 100 साल सुनाई, लेकिन उस कथा में और एक But ब्राह्मण बैठते थे कथा सुनने के there लिए, was another उसका Brahmana who नाम used था to पुण्य sit, धामा। and his name कहते was तो रिया नहीं करेंगे, Punyadhama. क्या नाम था? पुण्य धामा। अब रोज कथा होती थी तो पुण्य So they धामा both, गंगा के तट पर ही रहते थे। so they कथा had the सुनते Katha थे, every कथा day. सुनना, कथा सुनकर घर So घर कथा, कथा घर घर so कथा, they used 100 to साल बीत गए। go back and forth from his home to the banks एक of दिन Ganges क्या and हुआ, listen, and 100 years passed like this. दो ब्राह्मण So one day it पुण्य so धामा को happened रास्ते में मिले that two और Brahmanas कहा कि met हम लोग तीर्थाटन करने आए हैं the और speaker, हमको and they गंगा said that स्नान करना है, we are गंगा here नदी कहाँ to पर visit है? the holy places, so we want to take a पुण्य dip धामा in ने the holy कहा Ganges. कि Punyadhamas मैं यहाँ replied, पर 100 साल से रहता हूँ, "And I have been staying here for लेकिन 100 कभी years, गंगा में स्नान नहीं किया। but I have never taken a dip in the holy river गंगा यद्यपि Ganges. यहाँ से केवल 2 Although माइल दूर है, she is लेकिन 100 very साल near से to मैंने us, गंगा में but स्नान नहीं I किया। have not taken a dip लेकिन यहाँ दक्षिणी दिशा in में the आवन जावन हो रही है, yeah, आप वहीं पर चले banks जाओ, of वहां पर शायद so गंगा मिल जाएगी। you can find her इतना सुनते ही वो जो 2 towards the ब्राह्मण south." थे, So after बोले listening, गंगा के these तट two पर रहता Brahmins है said, और गंगा में "You स्नान नहीं stay करता, on the banks of कितना Gangaji, yet अधम you haven't है, taken a ये dip. आदमी कितना पापी Again, है, ये how तो पशु much से भी नीच है, sinful are you? इसको You तो are नरक में भी worse जगह than नहीं an मिलेगी, animal. You इसके should साथ not खड़े get a रहने की place चीज even in नहीं hell. है, We should भागो not यहाँ से, get इसका his चेहरा association. We देखना भी should run. ठीक नहीं है। We should not इस even see his प्रकार से face." वो पुण्य So in धामा this जो manner, 100 साल कथा सुना, उसका Punyadhama, अपराध who कर दिया। बोले केवल had कथा ही सुना, heard गंगा the में स्नान Katha नहीं for करता, 100 गंगा तट पर रहता है। years, he
was offended, and these two Brahmanas went गंगा को खोजे लेकिन गंगा मिले नहीं। and they searched for Gangaji, ऐसा कहते but हैं he was unable to find कि her. हिमाचल से गंगा It is said सागर that तक चले गए, they अनेकों स्टेट, started अनेकों from राज्य, Himalaya to लेकिन Ganga Sagar कहीं भी गंगा and का crossed so many दर्शन नहीं states, हुआ। but they couldn't meet her. तब दोनों माता गंगा की Then स्तुति करने लगे। they started महाराज venerating हो गया, Gangaji, कोई प्रॉब्लम हो that गई? if I have हम तो offended, सुना है गंगा then यहाँ please, यहाँ बहती है, we लेकिन have heard that कहीं गंगा you माता का flow, दर्शन ही नहीं but हुआ। we haven't seen you. तब उनकी स्तुति से गंगा माता Then प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। Gangaji became satisfied and तब manifested गंगा माता ने कहा, and साक्षात told, गंगा नदी ने कहा कि Gangaji तुमने personified, भागवत के श्रोता told का अपराध that किया है you have disrespected a और listener मैं of Srimad वहीं पर Bhagavatam, दर्शन देती हूँ, मैं and वहीं पर I रहती हूँ जहाँ पर manifest भागवत and होती है, stay only where और तुम Bhagavatam दोनों is निंदक हो। spoken, and you भागवत have कथा करने criticized वाले की तुमने निंदा की है। and you have criticized a speaker of ये Srimad दोनों Bhagavatam. तुरंत उस पुण्यतमा, उस So भागवत के श्रोता they के went पास back आए, to उनके Punyatama चरणों में गिरे, शक्ति and हाथ bowed down जोड़ at his दिए, lotus feet और and जैसे ही माफी मांगी, asked for forgiveness. उसी समय And वहां पर as माँ soon गंगा प्रकट हो गई। as they asked कहने for का मतलब forgiveness, ये है Gangaji manifested. कि So भागवत कथा का श्रवण it यदि implies तुम कर that रहे हो if you are तो listening to दुनिया Srimad में और Bhagavatam, कोई कार्य नहीं बचता। then there is nothing जितने to भी be विधि done. निषेध, विधि विधान, All जितने भी the कर्म हैं, भागवत के Vedic सामने सब छोटे injunctions पड़ are जाते हैं। followed and और are इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने far कह दिया कि हे inferior पिबंती भागवत, to जो भागवत को listening to पिएगा, Bhagavatam. व्रजन So that is करकर why चरण, Shukdev तो ji has said भगवान that के चरण को those प्राप्त who करेगा। have और कैसे? who listen केवल to भगवान के Bhagavatam will समीप attain चरण the को feet प्राप्त of the करेगा। Lord, and he will stay closest to तो the इस Lord. प्रकार से So in कृष्ण this जी श्रीमद् manner, भागवत कथा Shri का Shukdev वर्णन ji करते हैं। told the हम glories सबको of परम Srimad सौभाग्य Bhagavatam. है We are कि हम extremely सब ने fortunate श्रील that प्रभुपाद जी की कृपा से under the भागवत का mercy of आश्रय लिया है Srila Prabhupada, और we are प्रतिदिन इस under the प्रकार shelter of Srimad श्रीमद् Bhagavatam, भागवत कथा का and श्रवण every कर रहे day हैं। we are listening to Srimad मैं विशेष Bhagavatam. धन्यवाद देना I चाहूंगा really want to अग्रवाल thank परिवार, the जिनके Agarwal पूर्वजों family, का स्मरण करते and हुए I want to श्री remember their सीताराम ancestors, अग्रवाल, Shri Sitaram Agarwal, श्री गोमती देवी, Gomati Devi, बलदेव दास जी, Baldev Das ji, बसंती देवी जी, Basanti Devi ji, रामलाल जी, Ramlal ji, विश्वम्भर लाल जी Vishambhar Lal ji, और पूज्य राधा गोविंद and गोस्वामी महाराज के शिष्य disciple श्री of Sri Radha विश्वमंगल Govind प्रभु, Maharaj, Vishwamangal ऐसे Prabhu. पावन पूर्वजों की स्मृति So में in memory ये of सुंदर कथा these का आयोजन किया गया। pious हम ancestors, this सब katha has been organized. हमारे स्वतः We उद्धार के all लिए और should, for हमारे our पवित्र welfare and उद्धार for के लिए welfare of our इस कथा का श्रवण ancestors, कर रहे हैं। we are आप listening to सभी the का बहुत Bhagavatam बहुत Katha. धन्यवाद। I am really निधि grateful to all अग्रवाल, of you. निधि अग्रवाल का धन्यवाद। आइए We are एक thankful भाव के to the साथ Agarwal family. हम So इस let's पूर्ण conclude the session with कथा Jai का विराम Jaikar, करें। the 5th day of this Bhagavatam Katha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान के